On Saturday, October 8th, 2005, northern Pakistan was hit by a devastating earthquake, measuring over 7.6 on the Richter scale. The earthquake left almost 80,000 people dead, 100,000 injured, and 3 million homeless. Many people in the affected areas lost everything: family, belongings, and means of earning a living. बच्ची मर गई तो और 2 बच्चियां जख्मी हुई नहीं, भाभी नहीं पड़ी। एक बिल्कुल ख़त्म हो गया सी, वो 3 दिनों बाद कड़ी निकाली, मकान थी अंदर। इसी तरह बाहर ज़मीन ते रहे हैं, बच्चे सारे जख्मी, कोई जेड़े मर गया से वो मकाना ही तले रहे 3 दिहाड़ियां बाद कढ़े। किसी दा और अपने दा किसा दा पता ना आ सके कुथे न कोई है कि नहीं। Within days of the earthquake, assistance flooded in from across the globe. Concern worked in partnership with Church World Service, Islamic Relief, and Rural Development Project, distributing essential items such as tents and stoves, and providing water and sanitation facilities to over 160,000 people in the worst affected areas, which were Mansehra district of Northwest Frontier Province and Pakistan-administered Kashmir. I think nobody can underestimate how difficult circumstances were during those early days. Lots of people just had nowhere to go. They were traumatised, they had no access to food, they had no access to any of their possessions. They were buried underground, they had family members dead. It was total chaos. But at least if we could get them under some sort of shelter, because the rains unexpectedly arrived very early and the temperature dropped considerably in those early days. So shelter, food, blankets, and obviously a degree of moral support to let people know that they weren't alone in this disaster. By spring of 2006, with the weather improving and the basic survival needs of the affected communities met, Concern and partners began to shift their focus from relief to reconstruction and rehabilitation. In Mansehra, Concern continued to work with Rural Development Project in Balakot and teamed up with Hasher Association in Siran Valley to assist in the rehabilitation of the most remote, mountainous parts of the district. हर विलेज में जाके वहाँ पे असेसमेंट करने के बाद उनको बताया कि हमारे पास क्या प्रोजेक्ट है और हम कैसे काम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिलके। उसमें आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी और हमारी आरडीपी और कंसर्न की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी। वहाँ पे मिल बैठ के फिर हमने वहाँ पे एक तंजीम साजी की। सबसे पहले तंजीमें बनाई गई हर गांव के लेवल पे और उन तंजीमों के साथ फिर हमने गांव की सतह पर एक रिहेबिलिटेशन प्लान जो होता है, बहाली का प्लान, वो बनाया। फिर उसके मुताबिक लोगों की तंजीमें बनाकर लोगों के नुमाइंदों के ज़रिए उनके उन मसाइल पे तवज्जो दी, जिसमें ज़्यादातर रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। ज़राअत के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा काम था, यहाँ पे लोगों की मार्केटें बिल्कुल तबाह हो गई थी। फ़ौरन हमने इनकी तरफ तवज्जो दी, उनकी दुकानों के लिए उनको असिस्ट किया, उन्होंने अपनी दुकानें बनाई, दोबारा काम शुरू किया। और मज़े की बात यह कि ये काम हमने ना सिर्फ मर्दों के साथ किया, बल्कि हर जगह पे हमने ख़वातीन को भी इस काम में शामिल किया। इसी के साथ साथ इन लोगों की हमने कैपेसिटी बिल्ड की। इसी तरह इन लोगों के जो पानी की स्कीमें तबाह हो गई थी, जो रोड तबाह हो गए थे, जो रास्ते तबाह हो गए थे, उन सब को बहाल करने के लिए लोगों की कमेटियाँ बनाई। पहले ओवरऑल कमेटी बनी, फिर उनकी प्रोजेक्ट कमेटी बनी और फिर उसके साथ साथ हमने बाहर से किसी ठेकेदार को नहीं लाया। फिर हमने इन्हीं लोगों को वो वहाँ पे काम दिया। इन्हीं लोगों ने वहाँ से अपना काम भी किया और उसी से इनकी इनकम भी हुई। As described by our partners, one of the most significant aspects of Concern's intervention was the level of community participation and the high level of involvement of local women in particular. Concern's rehabilitation work in Mansehra was aimed at helping the local community rebuild their lives and livelihoods.
restoring access to drinking water, providing thousands of families with materials for the construction of latrines, arranging health camps, and training community health workers and traditional birth attendants help to prevent the spread of disease and enable community members to access healthcare at a crucial time. In this part of Pakistan, healthcare services have always been limited and are mainly located in distant urban areas with poor transport linkages. Mother and child health services are particularly poor. After the earthquake, Concern adopted a strategy which not only addressed the lack of mother and child health services, but also provided local women with a source of income. Under Concern's rehabilitation program, local women, like Sakina Bibi, who lost everything, were trained as traditional birth attendants, providing them with an opportunity to earn an income while also providing a vital service to their communities. पहले असी ये काम कर दिया सी दाइयां दा मैं पहले भी कर दिया सी पर इतना असा को ना सना जियां हुन बाद विच समझो पता लगे कि हाथ धोना दा नाखन कटना दा और ये जेडी बच्चों दी समझो सफाई और बिस्तरा साफ करना दा ये असा कौन पता लगे इथे अस्ति अपनी एक आसी ना रोज़ान दा रमजान दा महीना सा फिर मैं गई स्कूल उसको मैं देखिया उससे ठीक होना दी था ना सा फिर उसको असा अस्पताल भेज छोड़ा फिर ना कलामता आसियां उसका समझो खून भी चेक कीते अच्छा और उसको खून की कमी आसी समझो वो मैं उसको दस रहा थोड़ी खून की कमी है तो उसे अस्पताल ही चलो. Another person whose life has changed as a result of Concern's rehabilitation work is Ali Asghar from Balakot, who worked in a local hotel prior to the earthquake. When the earthquake struck, he was sleeping. He was awoken by a terrible noise just before his home collapsed upon him. चरपाई तो उठ के इस तरह मैं अपनी लतां तले करके ज़मीन पे बैठा वो पिछो मकान आया दीवार मकान दिया कि इस तरह मेरी कमर ते लगी है और उस दबाव नाल वज़न नाल चरपाई टुट के ज़मीन ते चली गई है और ज़मीन ते जाने तो बाद मेरा सिर जड़ा है मेरे पैरों ते चला गया और इस तरह दूरा करके मेरी कमर दी फ्रैक्चर हो गई है और बड़ा खौफनाक मंजर सी बड़ा खौफनाक समा सी. He was lucky to survive, but his injuries left him paralyzed from the waist down and unable to earn a living for his family. Concern helped Ali Asghar establish a grocery store. His store provides his family with an income, as well as providing a valuable service to his community. उन्होंने सारे मैंने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया. उस तो बाद जदों RDP ने मेरे नाल तावन किया दुकान दी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 50-60% बोझ इस नाल कम होया ते इसी वजह तो मैं अपनी जगह ते बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अपना निज़ाम मेरा घर दा चल रहा है. Concern further facilitated the revival of the local economy by enabling the community to restore agricultural production. Training and cash grants were provided. In community discussions, it was pointed out that both Siran Valley and Balakot are well suited to forestry and fruit production. This form of agribusiness had not been promoted in the area before the earthquake. Concern supported the establishment of numerous forestry nurseries and orchards in Mansehra. Today, these nurseries and orchards provide vital employment to local people. ये आशर ने सबसे पहले हमें नर्सरी दी उसके बाद उन्होंने हमें इसकी ट्रेनिंग दी. ट्रेनिंग के बाद हम बहुत कुछ सीख गए और नर्सरियों से ये हुआ कि हमें बाइज़्ज़त रोज़गार मिल गया. मुझे ही रोज़गार नहीं मिला बल्कि मुख्तलिफ़ गाँव के लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है. यहाँ मेरे साथ वो काम कर रहे थे और उनको भी अच्छी दिहाड़ी मिलती थी. 10-12 महीने और कोई काम नहीं करना पड़ा और इसी से अपने घर की कफालत करते थे. Concern is working in some of the most remote parts of Mansehra district. The earthquake destroyed many of the local footpaths, roads and bridges, cutting off communities from hospitals, schools and markets. If Concern's rehabilitation program was to succeed,
Restoring these vital linkages was essential. Concern worked in partnership with local communities to rebuild the essential transport infrastructure that was destroyed by the earthquake. Local men were hired to carry out the work, providing a much-needed injection of cash into the local economy. सर मशीनें लगियां नाल दिहाड़ी ते असीं लोग खुद काम करते रहे हैं दिहाड़ी के हिसाब से असें को पैसा मिलता रहा है फिर इस तरह से रोड बनया फिर खुदा ताला इन्हों को जो है तो पानी भी असें को मिले सब चीज़ें असें को तंजीम से बहुत बड़ा काम किया सना इस ग्रां निराल जो है असें को अपनी बसने के काबल कर सटिया है ना कि सब मस्तियाँ मकान बन गए सब चीज़ें असीं आने दे हकदार बन गए गड्डी होना आंदी है सब शे आंदी है अल्लाह का शुक्र है। Small improvements can make a big difference. In a remote part of Siran Valley, community members highlighted the need to repair a bridge connecting one part of the valley with another. सबसे बुनियादी उन्होंने कहा जी कि हमारा ये ब्रिज हो क्योंकि इन लोगों की स्कूल की बच्चों की एक्सेस ख़त्म हो गई थी ख़वातीन की एक्सेस ख़त्म हो गई थी इन सब को प्रॉब्लम आ रहे थे और जब ये हम बना रहे थे उन दिनों बिल्कुल हमारे सामने दो ख़वातीन नीचे नले में चली गई थी वो मर गई थी तो इस वजह से हमने इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आए और अब जब हमने इनको बनाया तो लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें जो आटे की बोरी लोगों को 800 रुपये में 900 रुपये में पहुंचती है अब वो 700 रुपये में पहुंचने शुरू हो गई। इसी तरह लोगों को बच्चे जो स्कूल को नहीं आ रहे थे टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे वो बच्चों का स्कूलों को एक्सेस होना ये बहुत बड़ा है। उसके बाद जो मरीज़ हैं वो अब आसानी से उनकी एक्सेस हो गई है रोड तक एक्सेस हो गई है। सुबह स्कूल जो जाने तो माँ नाल आके बोलते बच्चे इनके कारणों नाल मावा आंदियां सी और कोई हो लड़की आके तो पुलिस पार कर दे खतरा सा। In order to protect the area's transport infrastructure from future earthquakes, landslides, and soil erosion, Concern built protective structures, such as retention walls and cut-off channels, and planted thousands of trees in order to stabilize slopes. Water is essential to the welfare of any community. After the earthquake, Concern and partners embarked on a major drive to improve the supply of water to the people of Balakot and Siran Valley. As a result, women, who prior to the earthquake had to travel long distances to fetch water, now have a clean supply of drinking water close to their homes. सर पे रख के गड़े में पानी लेकर आते थे वो नीचे हम जाते थे रोड से बहुत नीचे जगह उधर जाते थे सब औरतें लड़कियां जाते थे। बाज़ ऐसा भी होता था कि मेहमान बैठे हुए होते थे फिर हमें कोई भी ना होता था हमें खुद जाना पड़ता था मेहमानों को भी अकेला छोड़ना पड़ता था। अब ये फ़ायदा है कि घर में आ गया पानी तो इस्तेमाल करते हैं ये फ़ायदा है बहुत फ़ायदा है इससे जाने से हमें वक्त वो भी बच गया। Farmers have also been able to restore agricultural production to the pre-earthquake level, and in many cases exceed it. जी ज़लज़ला आया उस वक़्त तो बाद जी सारे काम हस्ते मुनक़त हो गए क्योंकि पानी वाटर चैनल भी रुड़ गए ज़मींदारी भी बंद हो गई और वो साल हस्ता बड़ा मुश्किलात तक गुजरे जी। कमेटी बनने के बाद उन्होंने हमें ये इरिगेशन चैनल दे दिया। इरिगेशन चैनल देने के बाद सब मटीरियल फ़ौरन आ गया सर्व हो गया तो ये इधर तमाम लोगों ने खुशी से दिलचस्पी से मिल के इस वाटर चैनल पे काम करवाया भी किया अशर ने लेकिन सब लोगों की दिलचस्पी से ये काम पाया तकमील तक पहुंच गया। ये जी बस कुछ किसी को जरा काम दीवार लाना दांदा सा जिसको स्लैपां उठा के ले जाना दांदा सा बस मसाला कटना दा सीमेंट सब ने मिलजुल के कीता जी तो खुदा कीता कि सब काम हल हो गया जरिया माश था निज़ाम कुछ बहाल हो गया। Life for women in Pakistan, especially in rural areas, has always been tough. In NWFP, women have traditionally been confined to their homes, with virtually no access to higher education or employment opportunities, and have had little or no say in decisions affecting themselves, their households, or the wider community.
While the earthquake was undoubtedly terrifying and traumatic, the approach taken by local and international organisations, including Concern, in the wake of the earthquake, has had a positive impact on the lives of the women in the earthquake-affected areas. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੁਲਦੇ ਆਸਿਆ ਨਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ तो उस तो बाद ही ये आसान मुझ फ़ायदा है। अब फीमेल्स जो हैं वो हमारी देख लें आरडीपी के साथ काम कर रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स हमारी आरडीपी के साथ काम कर रही हैं ऐसा कि वो बैंक्स भी जाती हैं, बैंक्स में जाके अपने अकाउंट्स ओपन किए हैं उन्होंने, बचत जमा करती हैं, चंदा जमा करती हैं और वोकेशनल सेंटर्स जो हमारे हैं वहाँ जाके सीखती हैं। और इससे पहले कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था, ट्रेनिंग्स में जाती हैं, हम लोग बुलाते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह डिफरेंट है कि मेल्स उन पर ट्रस्ट करने लगे हैं। सही तरीके तो वो समझती है ना, तो वो अपने हर घर के फैसले खुद कर दिए, ग्रां के फैसले कर दिए। वो जमा होती है जिस टाइम वो आती है फलाना आदमी गरीब है, उस तो सारियाँ मासियाँ गल्लां कर दी खवातीन, फिर वो एक इंसान ना लिखता ना उस तरह जमात कर दिए, फिर खुल के अपने फैसले खुद कर दिए। मिसाल है कि मर्द सारा काम कर दिया सी और खवातीन भी कर दी। It's not just a case of giving things out, it's actually sitting down, talking to people, learning what their lives were like and what they would like their lives to be like. And the women are far more actively involved in the decision-making process than they were before the earthquake. It's the women who often decide where water points are going to be. It's the women who decide what sort of skills they would like to learn. The difference to women's life in the earthquake zone since the earthquake has been quite tremendous. In the years that have passed since the 2005 earthquake, much has been achieved. Many of those who had left after the earthquake have returned. Businesses have reopened and farmers are back to work. However, much remains to be done, and the area remains vulnerable to a variety of natural disasters. In the future, Concern and partners will build on the achievements of the past few years, continuing to work with vulnerable people in Mansehra to reduce poverty by creating new business, agricultural and employment opportunities. Concern will support village committees as they strive to reduce the vulnerability of their communities to natural disasters, while also strengthening the local authorities' capacity to provide basic services. Through this strategy, Concern hopes to help these resilient communities breathe life back into the earthquake-affected areas.